is completely based upon division and multiplication. In the last video, you have already studied about the division and the multiplication of whole number, and I hope that you get everything clearly. So today the topic that we shall discuss is slightly different than the previous chapter. So in this topic, the point that we are going to discuss is based on factors and multiplication. So in order to understand about the factors and multiplication, and also in order to solve the question that based on factor and multiple, you have to know about the table fluently, because in the absence of this tendency we cannot find out the factors or multiple of any number directly. In this case we need to read the table again and again in order to find the factors. So you have to learn the table in fluence order. So let's see what is the factor and multiple. So first of all we shall discuss factors. First of all we shall discuss about factors. So let us see, as we know that about the division, we write any number in this form is called division. Okay, सपोज यहाँ पे हमें 25 को 5 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए आप क्या करते हो? सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हमें 5 का टेबल इस कदर पढ़ना है कि 5 के टेबल में 25 आ जाए। एक्चुअली में हम किसी भी नंबर का टेबल नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली में जो हम लोग टेबल करते हैं, दरअसल हम लोग टेबल नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली में हम लोग उसमें किसी भी नंबर का जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं, तो टेबल न पढ़ के उसको हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं 5 का टेबल लिखता हूँ तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 का, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 is equal to 30, 5 multiplied by 6 is equal to 30, and so on. So in this way we write our table. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, and so on. But actually the process here we can see that we multiply 5 by some natural number, then we get these product. So these product get together, we say a table. So in this question we need to multiply 5 by a number which gives the product as 25. So here we can see that when 5 multiplied by 25 multiplied by 5, so when 5 multiplied by 5, we get the product as 25. So here we get the remainder as 0. So इस ऑर्डर में हम देखते हैं कि हमको 5 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट हमको 25 मिल जाए। तो हम जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमको 25 मिलता है। तो यहाँ पर 25 माइनस 25 0 हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है कि ये जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवीज़न कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवीज़न, एंड द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज नोन एज डिविडेंड, इज नोन एज डिविडेंड, and the number which multiplied to divisor in order to give 25
is called quotient, is called quotient. Okay student, and this is called reminder, this is called reminder. But here we need not to know more about the division. Here just I want to show you that whenever any number divides a given number, leaves remainder as 0, then such number have their specific name. जब कभी भी कोई नंबर किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मीन्स कि रिमाइंडर हमको 0 मिलता है, तो उस डिवीजर को हम एक अलग नेम दे देते हैं. ओके, सो हियर वी कैन से दैट 5 divided 25 as leaving remainder 0, so that this divisor have specific name and that name is called factor. तो यहाँ से हम फैक्टर की डेफिनेशन देते हैं कि जब कोई नंबर किसी दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मीन्स जब डिवीजन करते हैं तो अगर रिमाइंडर हमको 0 मिलता है तो हम कहते हैं कि वो डिवीजन क्या है, फैक्टर होता है. तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि डिवीजन क्या है, 5, और 5 से जब हमने 25 को डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर मिल गया 0. तो 5 को हम क्या कहेंगे, 5 इज द फैक्टर ऑफ 25. तो 5 क्या है, 5 जो है वो 25 का फैक्टर होता है. तो इन द सेम वे वी कैन डिफाइन all the number, and this is the exact definition. So let me write the definition of factor. A number which can be divided, which can be divided a given number leaving remainder as 0, leaving remainder as 0 is called factor of that number, is called factor of that number. Okay, for example, when 25 is divided by 5, then here we get quotient as 5 and remainder as 0. Therefore 5 is the factor of 25. Okay, so here we can see that 5 divide 25 completely, therefore we get the remainder 0, which shows that 5 is the factor of 25. Therefore 5 is the factor of 25. Here 5 is only not the factor of 25. If a number is given, then it may have more than one factor. Except one only, all the numbers have their factor more than one. Here, except one, all the numbers have factors
1 से ज़्यादा होते हैं। सिर्फ 1 ओनली एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, हाफ। इफ 1 is given to be divided, then there is only one possibility, is that this one can be only divided by 1. There is no any other number which can be divisor of 1. सिर्फ 1 को छोड़कर यहाँ पर कोई और ऐसा नंबर नहीं रहेगा जो 1 को डिवाइड कर सके। तो हम कह सकते हैं कि 1 का सिंगल फैक्टर होता है, लेकिन 1 के अलावा अन्य जितने भी नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 से ज़्यादा होते हैं। या तो वो फैक्टर 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं। Suppose that 30 is a given number and we have to find out its all factor. Here I just want to show that except 1, the all other number have more than one factor. So as we know that when we read the table of 1, that is, if we multiply 1 by a natural number 30, we get the product as 30. So we can say that 30 can be found in the table of 1, which means that 1 will be the factor of 30. Similarly, when 2 multiplied by 15, we get 30, which means that in the table of 2, 30 also comes, so that 2 will be the next factor. इसी तरीके से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो भी हमको 30 मिलता है, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि 3 के टेबल में भी 30 होता है, तो 3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। लेकिन अगर आप 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, इसका मतलब 4 जो होगा इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर नेक्स्ट देखें 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30। 5 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 कोई नंबर है, उसमें आपने एक नेचुरल नंबर 6 से मल्टीप्लाई किया, हमको 30 मिल गया। दैट मीन्स 5 के टेबल में 30 होता है, इसका मतलब 5 जो होगा इसका फैक्टर होगा। यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो जब आपने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमको 30 मिल गया। दैट मीन्स 6 will also be the factor of 30, but 7 will not be the factor of 30. Similarly, 8, 9 will also not be the factors of 30. But 10, as we multiply 10 by 3, we get 30 again. So that 10 will be the factor. Again 15 and 30. So 30 has its all factor are listed here. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. These numbers are called factors. These are the factors of 30. So here you can see that except 1, there are all numbers have more than one factor. So I hope about the factor you get the idea. Now let us see the next, that is called multiple. So as I told you that if we read a table of any number, then actually we are not reading the table, we just here multiplying the given number by some natural number. Okay, if I say read the table of 6, then in order to read or write the table of 6, we just multiply 6 by some natural number. 6 multiplied by 2, 6 multiplied by 6, 3, 6 multiplied by 4, 6 multiplied by 5, 6 multiplied by 6, 6 multiplied by 7, and so on. So here we can see that the number 6 is multiplied by some natural number. So here
we get some product, that is 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. And these numbers that here we get after the multiplication of 6 by some natural number are known as multiples. So what is the multiple? We define when a number is multiplied by natural number, then the product is called multiple. When a number is multiplied with some natural number, then the product will known as multiple. So here we can see that the example, the multiple of 6 is, here we multiply 6 by some natural number and we get the product. So these products are known as the multiple of 6. Here when a number is multiplied by 1, then its multiple is known as the first multiple. Similarly, when a number is multiplied by 2, then the multiple is called second multiple. So here we can see that 6 is the first multiple of 6, 12 is the second multiple of 6, 18 is the third multiple of 6, 24 is the fourth multiple of 6, 30 is the fifth multiple of 6, and similarly we can proceed now. So I hope the concept of multiple and factor is clear to everyone. If you have any doubt, then please mention a comment in the comment section. If you like the video, then share to other friends, and if you are new on my channel, then subscribe my channel to get the recent update. So we shall meet in the next video with some new topic. Till then, goodbye.